Hi, welcome to EasyPeazMaths class. Today we are going to start with chapter 1 real numbers, assertion reason. What is assertion reason? Assertion reason में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं. उन्हीं 4 ऑप्शंस को उनमें से कोई एक आपका करेक्ट होगा एंड क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी जिसमें एक असर्शन होगा एंड सेकेंड रीजन होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. अगर दोनों ट्रू हैं एंड सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, उसको फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. इन सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट सेकेंड इज नॉट ट्रू एंड जो सेकेंड जो रीजन है दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 फॉल्स है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. एंड इन ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 अगर फॉल्स है एंड सेकेंड इज ट्रू देन डी ऑप्शन. सो लुक फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. व्हाट इज गिवन, if HCF of 90, 144 is equals to 18, then LCM of 90, 144 is equals to 720. And reason में क्या given है, HCF of A, B into LCM of AB equals to A, B, right? तो ये given है. अगर आप सेकेंड रीजन चेक करें तो सेकेंड रीजन करेक्ट है. हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में क्या रीड किया, ये फॉर्मूला होता है, हम इसी फॉर्मूला को यूज करके फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, असर्शन. यस, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट, एंड अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1. राइट, स्टेटमेंट 1 का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. एंड अब स्टेटमेंट 1 हम चेक करेंगे क्या वो फॉलो कर रही है या नहीं, उसका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट. सो HCF ऑफ 90, 144 इंटू LCM ऑफ 90, 144 इक्वल्स टू 90 इंटू 144. हमें HCF क्या गिवन है, 18. LCM वी हैव टू फाइंड 90, 144 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 144. यहाँ पे LCM चेक करते हैं क्या वो करेक्ट है. 90, 144 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 144 अपॉन 18. 18 5 are 90 एंड 144 इंटू 5 इज 720. सो हमारा आंसर क्या आया, 720. एंड फर्स्ट ऑप्शन में भी एलसीएम कितना है, 720. सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, राइट. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, if LCM of 2 numbers is 360, then HCF will be 12. In second statement, reason is given, HCF of 2 numbers into LCM of 2 numbers is equals to addition of 2 numbers. So this statement is false because we already know statement 2, HCF of 2 numbers into LCM of 2 numbers equal to product of 2 numbers. But यहाँ पे क्या given है, addition of 2 numbers. तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, फॉल्स है. एंड लुक फॉर द असर्शन. असर्शन में क्या होगा, हमने फॉर्मूला में पुट करना है HCF ऑफ 2 नंबर्स इनटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज गिवन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. देन व्हाट विल बी द आंसर, LCM इज गिवन, दैट इज HCF of 60, 72 into 360, 60 multiplied by 72. So HCF will be 60 into 72 upon 360. 66 are 360, 6, 12. Answer is 12. So
first statement is correct. Statement 1 is true. So according to this, कौन सा ऑप्शन आएगा? स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false. So option C is correct. Number 3 is if product of two numbers is 5780 and their HCF is 17, then their LCM is 340. And reason given is HCF is always a factor of LCM, which is true. Statement 2 is true, but it is not a correct explanation of assertion. Statement 1 correct. So look for the statement 1 now. What is given? Product of two numbers is given and their HCF and LCM is also given, right? So क्या आता है? HCF into LCM is equals to product of two numbers. HCF क्या आया हमारे पास? 17 and LCM क्या given है हमें? 340. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा? 5780. So statement 1 is also true. If statement 1 is true and 2 is also true, but 2 is not a correct explanation of statement 1, so option B is our correct option. Number 4 is statement 1. If 11 divides 627. Question number 4 is if 11 divides 6,27,264, then 11 divides 792 also. Reason, let P be a prime number and A be a positive integer. If P divides A square, then P divides A. अगर हम reason को check करें, we already read this theorem in chapter 1. Yes, so statement 2 is correct. Statement 2 is true. Also, it is a correct explanation for statement 1. Correct explanation of statement 1. Correct. And look for the statement 1. If 11 divides 627 264, then 11 divides 792, which is also true. So statement 1 is true. So the answer will be statement 1 is true, statement 2 is also true, statement 2 is a correct explanation of statement 1. So option number A is correct. Question number 5 is in assertion the product of 5 plus root 3 and 2 minus root 3 is an irrational number. And in the reason the product of two irrational numbers is an irrational number. Look for the first statement. If we do the product of these two numbers, check 5 plus root 3, 2 minus root 3. क्या ये इनका आंसर irrational number में ही आएगा? 5 into 2 10 minus 5 root 3 plus 2 root 3 minus 3. So answer will be 10 minus 3 is 7 minus 3 root 3. So yes, this is an irrational number. Statement 1 is correct. In second reason में क्या है? Second statement में the product of two irrational numbers is an irrational number. Take two irrational numbers and check. Suppose we have root 5 and 5 root 5. These two numbers. If we are doing product of these two numbers, what we will get? 5 into 5, correct? Which is 25. 25 is not an irrational number. So statement 2 is false. So option C is correct option.